Level 1. The Conscript. You're 17. You don't enlist. You're assigned. A letter arrives. 10 years of mandatory service, no refusal. 3 weeks later, you're on a bus. Shaved head, no phone, no choice. The barracks hold 50 men in one concrete room. No heat, you sleep in uniform so you don't freeze. Wake up is 5 a.m. You run until someone collapses. If one falls, everyone runs longer. Breakfast is corn porridge. Lunch is corn porridge. Dinner is corn porridge. You're never full. You're never warm. One night, rations go missing. The officers don't investigate, they punish everyone. Shirts off, snow up to your knees. 3 hours kneeling in silence. Your bunkmate whispers, "This isn't right." The next morning, his bed is empty. No explanation, no questions. You learn fast. In this army, silence is survival. 6 months pass. You stop feeling hungry. You stop feeling anything. Then your name is called. Border transfer. Level 2. The Border Guard. You're 18. You're sent north. The Chinese border is 200 meters away. At night, you can see lights on the other side, brighter than anything back home. Your rifle is older than you are. 5 bullets in the magazine. Orders are simple. If someone runs, you shoot. No warnings, no negotiations. You patrol in pairs. You don't talk much. Talking leads to thinking. It's 2:13 a.m. The river is half frozen. You hear movement. A shadow runs toward the water. Your commander once told you 3 seconds is mercy. 1. You raise your rifle. 2. The figure reaches the riverbank. 3. If you shoot, you kill someone trying to escape. If you don't, you become the suspect. And suspects don't disappear alone. You hesitate. A rifle cracks behind you. The shadow drops into the water. Silence. Back at base, you're called in. No yelling, no threats. Just one question. Why didn't you fire first? You don't answer immediately. That pause goes into your file. From that night on, you stop aiming at targets. You aim at hesitation. 3 months later, your reports improve. Your reaction time improves. Your loyalty improves. Level 3. The Squad Leader. You're 22. You survived the border. Now you command 8 men. You're not promoted for strength. You're promoted for reliability. You inspect uniforms. You inspect weapons. You inspect behavior. Every letter from home passes through you first. I'm hungry. The harvest failed. I miss you. You decide what they're allowed to read. One night, a private whispers, "Life must be better across the river." You hear it. You say nothing, but you write his name down. The next morning, he's called to headquarters. By evening, his bunk is empty. The others stop talking at night. Your commander nods at you the next week. Good awareness. You understand something new. On the border, you survive by shooting. Here, you survive by reporting. You start watching more closely. Who hesitates? Who complains? Who thinks too much? Level 4. The Lieutenant. You're 26. You're sent to Pyongyang. The capital feels different. Clean streets, working lights at night, real meat twice a week. You wear a pressed uniform now. You attend officer academy classes, strategy, logistics, missile theory. But the most important subject isn't warfare, it's loyalty. You learn quickly, a brilliant officer who questions policy is more dangerous than the loyal, mediocre one. Once a week, officers gather for self-criticism. You must confess a weakness, even if you don't have one. I lacked enthusiasm. I didn't study enough. I must improve my devotion. If you confess nothing, it means you're hiding something. You choose your words carefully.
One lieutenant speaks too confidently. He corrects a superior during a briefing. 2 weeks later, he's reassigned. Rural Logistics Division. No one says why. You're given his responsibilities. Better apartment, higher clearance, closer access. You understand the pattern now. Talent is optional. Visibility is dangerous. And loyalty must always be louder than competence. Level 5. The Political Officer. You're 32. You no longer command troops, you command belief. You're assigned as a political officer to a missile unit. Even the commanding officer answers to you on ideological matters. Your job isn't strategy, it's loyalty. Every week, soldiers sit in a circle. They confess weaknesses. I felt tired. I hesitated during drills. I didn't study the leader's speech enough. You take notes. If no one confesses, you push harder. Silence means concealment. You start noticing small things. Who claps first? Who claps last? Who avoids eye contact? There's a young officer, smart, respected, popular, dangerous. He doesn't criticize himself enough. You write in your report, displays subtle individualistic tendencies. 2 weeks later, he's transferred. Labor Engineering Battalion. Your influence grows. You're invited to higher meetings. You're trusted with sensitive evaluations. But one afternoon, you're called upstairs. Your superior flips through your reports. Your assessments lack urgency. You understand immediately. Someone is assessing you. You built a system of surveillance. Now you're inside it. Level 6. The Colonel. You're 40. You oversee thousands of troops. You have a government car with a driver, a larger apartment in Pyongyang, imported alcohol at private dinners. Your children attend elite schools. Your parents were relocated to better housing. The system rewards loyalty. You manage missile readiness reports, training cycles, security clearances. Your signature moves resources. Your approval moves careers. But everything is documented. Your phone is monitored. Your driver rarely speaks. Your security detail changes without notice. At high-level meetings, generals speak carefully. No one interrupts. No one jokes. A general you dined with last month misses the next meeting. No explanation. His name is not mentioned again. A missile test under your oversight malfunctions during rehearsal. It's not catastrophic, but it's recorded. An internal review begins. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिराज क्रिएशंस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 6 एआई वॉइस जनरेटर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू वेबसाइट्स है। आज हम 11 लैब्स या रनवे के बारे में बात नहीं करने वाले। आज मैं आपको न्यू वेबसाइट्स बताऊंगा जिनसे आप एआई वॉइस जनरेट कर सकते हैं बिल्कुल 100% फ्री। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के साथ जुड़े रहे, क्योंकि नंबर 4 और नंबर 6 इनको तो भाई मिस नहीं करना। ये वीडियो की जान है, ये दो वेबसाइट्स मैं नहीं मानता, और मैं इनको पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ और ये 100% फ्री भी है। तो बगैर टेंशन के वीडियो लास्ट तक देखें। और एक मज़े की बात कि आपको इनमें पैसे पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो है ना मज़े की बात। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऑनलाइन रिलेटेड वीडियोज़, यूट्यूब ऑटोमेशन, टिकटॉक टिप्स और ट्रिक्स के लिए, एआई इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहली वेबसाइट है वो है वॉइस मेकर। आपने किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है, क्रोम ब्राउज़र या गूगल में, यहाँ पे सर्च करना है वॉइस मेकर। तो सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ से साइन अप करना है। जो डॉट्स है यहाँ पे, आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन विद गूगल करना है। जो मैं सारे वेबसाइट्स बता रहा हूँ आपने सब पे लॉगिन करना है। तो आप यहाँ से किसी भी जीमेल को सिलेक्ट करें। जीमेल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। मैंने आप लोग को समझाने के लिए छोटा सा प्रॉम्प्ट पेस्ट किया है। तो यहाँ से आप चेंज पे क्लिक करें और यहाँ पे लैंग्वेज है, आपने इसे उर्दू पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे प्रो है तो आपने सिंपल डिफ़िकल्ट पे क्लिक करना है। तो उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे सबमिट है, इसे आपने क्लिक करना है। तो सबमिट होने के बाद आपने यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट देना है जो आपने वॉइस ओवर करवाना है। तो इसको देने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे कन्वर्ट टू स्पीच पे क्लिक करना है। ये वॉइस मेर सिराज ने वॉइस मेकर से बनाया है।
तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा वॉइस बन गया। यहाँ पे तीर का निशान है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट वेबसाइट है वो है नारा किट। यहाँ से आपने सर्च करना है नारा किट, स्पेलिंग आप देख ले। यहाँ से सर्च करने के बाद ये फर्स्ट वाला वेबसाइट है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा नीचे आना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट टू स्पीच ऑडियो पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और नीचे आना है, स्क्रॉल करते जाना है, नीचे आना है। यहाँ से आपने उर्दू सेलेक्ट करना है। तो नीचे आना है, आपको यहाँ पे उर्दू मिलेगा, ये उर्दू है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। उर्दू सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। मैंने आप लोग को समझाने के लिए छोटा सा स्क्रिप्ट बनाया था, वो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने क्रिएट ऑडियो पे क्लिक करना है। तो क्रिएट ऑडियो पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लेगा, तो क्रिएट आपका ऑडियो हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं, हमारा ऑडियो क्रिएट हो चुका है। तो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये वॉइस मीर सिराज ने नारा किट से बनाया है। तो बहुत प्यारा वॉइस बना हुआ है। यहाँ से आपने थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जो हमारा थर्ड वेबसाइट है वो है क्रिक। आपने यहाँ पे सर्च करना है क्रिक। तो सर्च करने के बाद ये फर्स्ट वाला वेबसाइट है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने नीचे आना है, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। तो ये एड्स आएगा, एड्स को अपने कट कर देना है। कट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपने यहाँ पे डॉट फोर डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से फ्री टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश यानी लैंग्वेज है, तो आपने इस पर क्लिक करना है और नीचे आपने उर्दू सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये उर्दू है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। तो मैंने स्क्रिप्ट यहाँ से पेस्ट कर लिया आप लोग को समझाने के लिए। तो यहाँ से आपने जनरेट पे क्लिक करना है। तो जनरेट पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है, तो आपका ऑडियो जनरेट हो जाएगा। तो मैं आपको प्ले करके सुना देता हूँ। ये वॉइस मीर सिराज ने AI से बनाया है। तो यहाँ पे थ्री डॉट है, आप इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो हमारा वेबसाइट है ये बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूज़ होने वाला वेबसाइट है। तो हमने यहाँ से सर्च करना है देसी वोकल। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट है, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करें नीचे, यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, आपने इसे उर्दू करना है। तो उर्दू पे मैं क्लिक करता हूँ। उर्दू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना है। तो ये देखे, ये वाला यूज़ वॉइस पे आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से अपना प्रॉम्प्ट देना है। स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो आपने थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो थोड़ा सा वेट करें, ये मिनट में से जनरेट कर देगा। तो हम इसे थोड़ा सा प्ले करके सुना देते हैं आपको। तो मैं प्ले करके आपको सुना देता हूँ। ये वॉइस मीर सिराज ने देसी वोकल से बनाया है। तो आप देखिए कितना प्यारा वॉइस है, कितना अमेजिंग है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो सेकंड लास्ट वॉइस ओवर वेबसाइट है ये भी बिल्कुल न्यू है और आपने लास्ट बिल्कुल मिस नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल 100% फ्री भी है। तो हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर नंबर 5 के लिए। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फ्री रीड टेक्स्ट। तो ये सर्च करने के बाद तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट है, आपने इस पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पे सर्च करना है उर्दू। तो उर्दू सेलेक्ट करने के बाद आपने उर्दू पाकिस्तान पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट या प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। तो मैं आप लोग को समझाने के लिए छोटा सा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ और नीचे कन्वर्ट टू MP3 पे क्लिक करते हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हमारा ऑडियो जनरेट होने में। तो ये जनरेट हो गया है, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये वॉइस मीर सिराज ने फ्री रीड टेक्स्ट से बनाया है। तो कितना प्यारा वॉइस है, आपने यहाँ पे डाउनलोड MP3 पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लास्ट वेबसाइट था जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, वो है ट्यूब। इसमें 11 लैब्स के सारे फंक्शंस मौजूद है और ये बिल्कुल फ्री है। तो इसको सर्च करने के लिए हमें सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है DUP। तो सर्च करने के बाद ये वाली वेबसाइट है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे स्टार्ट 3 डे ट्रायल पे आपने क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा सर्च करेगा और यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा।
तो आपने यहाँ से एआई वॉइस ओवर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे न्यू वॉइस ओवर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे सी आल का एक ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है। तो सी आल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स है, इन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश में बनाना है तो आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपने कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पे कंफर्म करने के बाद इसे आपने यहाँ से एक आपने वॉइस ओवर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ सलमान है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कंफर्म कर देते हैं। तो इसे कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपने अपना स्क्रिप्ट पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ से ये स्क्रिप्ट आप लोगों को समझाने के लिए पेस्ट कर देता हूँ। और थोड़ा सा नीचे आने के बाद, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू वॉइस का ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये वॉइस मीर सिराज ने डीवेप डिप से बनाया है। तो देखिए कितना प्यारा वॉइस ओवर। यहाँ पे एक्सपोर्ट वॉइस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो? इसी तरह के मज़ीद वेबसाइट्स के लिए, ऑनलाइन अर्निंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम एक फैमिली की तरह साथ साथ ग्रो करते जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।